पूछा गया तो सीजीएचएस ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 33 स्वास्थ्य सेवा संगठन को भी इसमें सूचीबद्ध किया गया है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लोगों का उपचार किया जाए। वैसे ही सीजीएचएस लाभार्थी को नगद रहित सुविधा प्रदान करने के लिए भी एम्स गुवाहाटी के साथ भी एक समझौता और ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। सीजीएचएस ने सीजीएचएस पेंशनभोगी लाभार्थियों को नगद रहित उपचार के लिए 12 नवंबर 2024 को क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स इम्फाल तथा 25 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान निग्रिम्स शिलांग के साथ पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और निश्चित रूप से इसका जो बजट है कि ज्यादा से ज्यादा किया जाए तो पिछले बार जो 7,500 के लगभग इसका बजट था तो ये साल में उसको लगभग 1,000 करोड़ से बढ़कर 8,500 तक होने का भी अनुमान है। तो केंद्रीय कर्मचारी की स्वास्थ्य के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती है सीजीएचएस सेंटर में से तो वो देने के लिए निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। Supplementary to Shri Bhubaneswar Kalita. The Honourable Minister's reply is also already in the written answer. My question was different. That was the parity he is just 1 meter away from you. parity and pension among for the contextual doctors. Anyway, sir, my second supplementary is again during our visits to the CGHS wellness centers, we have noticed that these doctors scantily they prescribe generic medicines, and while we visited those some of the beneficiaries and the Kendras, the reply was from the Kendras that there is lack or shortage of popular diseases like popular diseases like diabetes, like kidney disease, or like blood pressure. So in these areas there is shortage of generic medicines in the Kendras, Janaushadhi Kendras. Whether the Honourable Minister will look into it so that generic medicines are made available for these rampant diseases. Thank you. सभापति महोदय, जो यहाँ पर जन औषधि पूर्ति के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, तो मंत्रालय के माध्यम से गुणवत्ता और खरीद में सुधार के लिए भी बहुत सारे पहल वहाँ पर किए जा रहे हैं और दर अनुबंधन विस्तार से भी जन औषधि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का काम भी निश्चित रूप से मंत्रालय के माध्यम से सीजीएस में किया जा रहा है और समान मूल्य निर्धारण के लिए भी सीधी बातचीत और स्वतंत्र तृतीय पक्ष गुणवत्ता का भी उसमें आश्वासन भी दिया गया है। और जो चिंता सदस्य ने यहाँ पर व्यक्त की गई है कि जन औषधि केंद्र सीजीएस में ज्यादातर लिखे नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी भी पड़ताल की जाएगी और लोगों को सस्ती दवाएं ज्यादा से ज्यादा कैसी उपलब्ध होंगी इसके लिए भी निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय से ध्यान रखा जाएगा। सप्लीमेंट्री 3 डॉक्टर परमार जसवंत सिंह सालम सिंह। माइक सर, मेरा क्वेश्चन 183 और 184 क्वेश्चन नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में अपने देश में एमएमआर और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आईएमआर दोनों में काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजियंस हैं जैसे असम, मेघालय और मणिपुर, वहां का जो एमएमआर है और आईएमआर दोनों नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। तो मेरा मंत्री जी से ये क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए
क्या हमारा कोई स्पेसिफिक प्लान है ताकि उसको नेशनल एवरेज के करीब लेके आए ताकि हमारा और भी अच्छा दिखे? और सीजीएचएस का इसमें कोई रोल बनता है या उसको कोई मिशन मोड पे लगा सकते हैं ताकि उसको हम जल्दी से इंप्रूव कर सकें? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। हम लोग रीजन वाइज भी, स्टेट वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और ब्लॉक वाइज वर्क करते हैं। हम लोग निकालते हैं कौन से स्टेट्स वीक हैं, उन स्टेट्स को क्या क्या उसमें वीकनेसेस के क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं। उसी तरीके से किसी स्टेट में उनके पैरामीटर्स अच्छे होंगे, बट कोई जिला है या ब्लॉक है तो उसको भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इस दृष्टि से जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, मिनिस्ट्री एक्ट्स अकॉर्डिंगली और हमारा जोन वाइज भी होता है। और नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, बहुत से ट्राइबल एरियाज हमारे सेंट्रल इंडिया में भी हैं जिसको हम प्रायोरिटाइज करके और प्रायोरिटी दे करके स्पेशल फोकस पे उन एरियाज को हम एड्रेस करते हैं। सप्लीमेंट्री 4 डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। Supplementary for 185, sir. So supplementary number 4, Susri Susmita Dev. Thank you, sir, for the opportunity. Sir, I have gone through the list of sanctioned posts and the vacancies, and there are 3 units in Silchar. But the figure against sanctioned posts is 0, sir. So therefore, they have not been able to fill it. My question to the Honorable Minister is that, sir, a posting in Northeast is seen in the country as a hardship posting sometimes, sir. So does the Health Minister have any provision to maybe hire doctors, paramedics on a contractual basis rather than filling up these permanent posts, which may help in better human resource? And नड्डा जी सदन में है, सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एनएचएम के जो एम्प्लॉइज है वो आसाम में बहुत दिनों से एक स्ट्राइक कर रहे हैं फॉर इक्वल पे इक्वल वर्क। बड़ी मेहरबानी होगी सर अगर आप उनके डिमांड को लेकर थोड़ा चिंता करें। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। डॉक्टर्स के लगाने का सवाल है। हमारे यहाँ कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज होती हैं और वो जैसे यूपीएससी लेता है और यूपीएससी ईयर वाइज ईयर लेता है। लास्ट ईयर 165 पोस्ट उन्होंने भरी थी और वो हम प्रायोरिटी पर नॉर्थ ईस्ट में ही हम भेजते हैं। और वैसे ही अब इस बार हमने 225 पोस्ट की रिक्वेजिशन भेजी है और वो एग्जामिनेशन होगा तो वी विल अपॉइंट अकॉर्डिंगली। जो आपने कहा कि लोकल लोगों को या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो मैं इनका सजेशन है, सजेशन इज गुड। देखते हैं मैं मंत्रालय में क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। और आपने एक बात और कही कि एनएचएम के लोगों का इक्वल पे वाला विषय हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप मुझे चेंबर में कोई इसके बारे में डिटेल पर्टिकुलर्स देंगे तो आई सर्टेनली लुक इनटू इट। I called out the name of Dr. Syed Nasir Hussain because he was trying to catch my attention. So I sent the marshal to find out what does he want, and came a chit he wants to ask supplementary on 184. Therefore 184 we'll try to accommodate in 185. But the best is we must send the slips now. Question number 185. Shri Rita Brata Banerjee. Question 185. Honorable Minister. Supplementary 1, Shri Rita Brata Banerjee. Thank you, sir. Sir, roughly the return of loans for the nationalized banks tends to around 12 lakh crore. It has been written off by the nationalized banks. The recovery rate from the answer that the amount of recovered loan is 1,26,000 plus, that is roughly 10%. Through you, sir,
I want to know from the Honorable Minister that can the Honorable Minister please provide the House with the details of the top 20 willful defaulters in India as on date, and state specifically what action has been taken to recover the outstanding amounts from these willful defaulters. It will be greatly appreciated if the Honorable Minister can furnish a written response on this with details. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने एनपीए की बात किया है, अगर देखें तो बैंक आरबीआई के गाइडलाइन के अनुरूप और अपने बोर्डों के अप्रूव्ड पॉलिसी के अनुसार एनपीए लोन को राइट ऑफ करती है। और साथ ही साथ अगर देखें तो राइट ऑफ करने से पहले 100% का प्रोविजन किया जाता है ताकि जमाकर्ताओं को कोई भी नुकसान ना हो। और राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा माफ कर दिया गया। जिस प्रकार से बैंक रिकवरी करती है और यथावत करती रहती है, और ये बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर करती है। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि एनपीए बहुत बढ़ा है, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो एनपीए लगातार गति से घट रही है और 2024-25 में अगर देखें तो 2.42% रह गई है। सप्लीमेंट्री टू श्री रीता ब्राता बनर्जी। Sir, my specific question was that the nationalized banks, overall 16.35 lakh crores have been written off. Overall, the nationalized bank amount is 12 lakh crores. Of that, the answer that is given by the government, it shows that the recovery is 1,26,000. That is merely 10%. So 90% of the loans is not recovered. Now my second supplementary, through you sir, I want to know, can the ministry please state the details of the cases where the government has taken recapitalization measures for public sector banks facing a high volume of non-performing assets. Please also state the details of the funds for recapitalization released to these banks in the last 5 years. I will urge through you sir, I need a specific answer. The earlier answer was not at all specific. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए, मैं निश्चित तौर से बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, आरबीआई और सरकार मिलकर के कहीं ना कहीं एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई ताकि बैंकों को मजबूती प्राप्त हो सके, और आज हमारे देश में सभी बैंक रोबोट्स तरीके से काम कर रहे हैं। Honorable Finance Minister is responding. One second. Honorable Finance Minister is responding. Sir, I just want to add a few more things to what the Honorable Minister of State has said. On the recovery of written-off loans, sir, first of all, I'm sure the Honorable Member realizes that when we say a loan is written off, it is not as if it has been completely waived off. The defaulter doesn't escape consequences. Action is taken through courts, action is taken through the IBC process, and recovered monies are restored to the banks. And that record of how much has been restituted to the banks have been periodically answered when questions are asked in the Parliament. We have done that. But I just want to, because the Honourable Member kept saying he wants specific details, the numbers that he mentioned are probably old. I want to give the latest numbers, sir. Actually speaking, recovery in written-off loans by banks, sir, had reached a peak in the sense by about 22-23 public sector banks, recovery of written-off loans has gone up to the level of 35,378 crores. Cumulatively, the public sector banks have recovered written-off loans of a total of 2,27,288 crores. Now, private sector banks on their own are also recovering, and they have recovered something like 55,598 crores, and therefore the recovery is an ongoing process. Every year adds to the total of money recovered. Now, as a whole, there is 2,27,288 crores which are recovered by just the public sector banks.
So that is on the recovery of written off loans. Supplementary 3, Dr. John Britas. Sir, thank you very much, sir. Sir, this is the first time I am speaking after you have come back fit as a fiddle, sir. It must have been very difficult for you. Yes, sir. Very difficult. So without you, sir, I feel orphaned, sir. Sir, through you, sir, I thank the Honorable Finance Minister for her kind gesture of going over to Kerala House to have breakfast with my Chief Minister, sir. Sir, having said this, there is an impression that all the sectors are equal in its default. In this context, I would ask a specific question here. Part A. What could be the sector-wise industry, service, agriculture, NPA, write-off, and the recovery thereof? These three sector-wise. And the B part of the question is that there is a growing concern that education loans are becoming NPAs on account of growing unemployment. Will the minister be kind enough to give the statistics of the amount of NPAs on this account, the write-off and the recovery? Thank you very much, sir. Honorable Minister. Specific details which are being asked about, let's say, the agriculture, the manufacturing and the services, and also on the student loans, I may have to obtain it. I don't have it ready in my hands. I'll always take it, share it in the House, and also share it with the Honorable Member. Difficult choice. I tilt in favor of Shri Digvijay Singh for supplementary number 4 at the cost of Dr. Syed Nasir Hussain. Come on now. Sir, if I call out someone, there has to be compliance. I have acceded to your request. Come on. I would be very happy to withdraw in his favor, sir. Doesn't matter, sir. I have taken a call. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एनसीएलटी के प्रकरणों में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जब तक हेयरकट एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक एनसीएलटी आदेश नहीं देता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम को पूछना चाहता हूं कि एसबीआई लगभग 65% लोन्स वो हेयरकट के वजह से नुकसान हुआ। इसी प्रकार 2 प्रकरणों में जो उसके क्रेडिटर्स की जितना अमाउंट था केवल 4%, 96% हेयरकट हुआ है। एक हुआ है रेडियस एस्टेट के लिए और वीडियोकॉन इंडस्ट्री के लिए। वहां का जो लाभार्थी कौन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अडानी गुड होम्स। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जो आपने उत्तर में बताया है जितना लोन राइट ऑफ हुआ है उसमें क्या हेयरकट का जो फिगर है वो शामिल है और क्या उसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मंजूरी दी है? Honorable Minister. Sir, the Committee of Creditors will have to give manzoori. There is not as if any one liquidation process or resolution process can. Is that a binding? Honorable Finance Minister is on her legs. Sir, very senior member sometimes is in a hurry to get the reply, just as he is in a hurry to also arrive at the numbers. 34% haircut and all that is on the basis of what claims have come through. Liquidation, and when it is done, and the calculation of haircut is being done by one section in one way, but the laid down procedures talk about liquidation value, the liquidation value on the basis of which you've recovered, and that is what is counted when you're talking in the terms of IBC resolution process. So the same number per the laid down rules approved by this Parliament through the IBC law
shows that 169% has been realized. 169% has been realized, sir. And therefore, looking at it from the value of claims alone does not count for what I will perceive as a haircut or somebody else will perceive as a haircut. Haircut is when you already have seen what's the liquidation value, and if you're realizing 169% of the liquidation value, Honorable Member Digvijay Singh will probably have to look at these figures also and then take the inference about how the system works. And moreover, this is the kind of number that we're talking about for those cases where the claims are more than 1,000 crores each. 164 corporate debtors whose cases were admitted have realized 169%. So, sir, it is important. If you're talking about particular cases, I do not want to get into who's the beneficiary, who's the bidder, who came to claim, and who is now taking over that defaulted company. Is the company's defaulting promoter coming through back door, which the law does not permit? All this, I'm sure the Honorable Member knows. But since he's talked about prominent cases, I will take the liberty 1 minute extra to tell through you, Sir Honorable Chairman. SR Steel India Limited, realization as percentage of admitted claims is 77%. And number of days it took for resolution is of course a protracted long one which goes beyond what we wanted it. It had taken 583 days. Sir, in the case of Binani Cements Limited, 99% has been the realization. MBL Infrastructure Limited, 120% realization. IVRCL Chengapalli Tollways Limited, 100% realization. So there are instances where realization is in this order. And to talk of haircut, 30%, 15%, 90% has been given away as a haircut are all, I'm sorry to say, will you allow me some indulgence, exaggerated. In the last session, the Honorable Finance Minister was very graceful to enlighten me about phone banking, this time about haircut. Srimati Sangeeta Yadav, supplementary 5. माननीय सभापति जी, आपको आभार कि आपने मुझे अवसर दिया। यहाँ चर्चा तो बैंकों के एनपीए और राइट ऑफ की हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इसमें चल रही है डिजिटल फ्रॉड का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस स्थिति से कंडीशन से निपटने के लिए कोई प्रयास कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर।